द्रव्य को लेकर हमारी जो एक कई बार जिज्ञासा बनी रहती है कि हम किस तरीके से द्रव्य को समझे और उसका सरलता से उपयोग कर सके। तो अभी हमने इसी व्याख्यानमाला से और जब भी हमारे पास वैद्य विरल भाई शाह का समय मिलेगा हमें, तो हम शुरुआत के 10 मिनट में एक बहुत अच्छी तरह से विरल भाई की बहुत वो विद्यार्थी अवस्था से ही अपने द्रव्य के विज्ञान के ज्ञान के लिए बहुत ही मशहूर थे, विद्यार्थियों में प्रिय भी थे और वो लेक्चर्स लेने भी जाते थे, तब भी हम उनके पास पे पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा समझते थे। तो आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, तो हम उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में ज्यादा समय न लेते हुए मैं डॉक्टर हार्दिक चुड़ासमा को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर हार्दिक, आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई बड़ौदा महाविद्यालय से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से शारीरिक क्रिया विभाग से की है और वर्तमान समय में आप राजकोट में आयुर्वेदिक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। नमस्कार मैडम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से की जाने वाली 274 अविरत व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले, है ना, हमारी परंपरा है कि हम कुछ भी शुरुआत करें उससे पहले हम भगवान धन्वंतरी जी की आराधना करें। तो डॉक्टर दीक्षा मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और धन्वंतरी वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओवर टू डॉक्टर दीक्षा मैडम। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम् धन्वन्तरिं रमानाथम् सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारम् वन्दे पीयूषदायकम्। धन्वंतरी मैं डॉक्टर विरल भाई शाह सर से कि वो अपना रिलेटेड, है ना, जो भी व्याख्यान है उनकी शुरुआत करें। डॉक्टर विरल भाई शाह, ओवर टू यू सर। नमस्कार माननीय हेतलबेन, सभी अध्यापकगण और विद्यार्थी, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको ऐसे वनस्पति बताना चाहता हूं जो मेडिकल इमरजेंसी में काम आ सके। मैं बताना चाहता हूं आत्मगुप्ता कपी कच्चू के बारे में। देखिए, कपी कच्चू के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आपको दिखाई देता है कपी कच्चू? ऐसी ऐसी उसकी सींग होती है कपी कच्चू। ये एक में है, प्लास्टिक के बैग में रखी हुई है। कपी कच्चू की पूरी लेग्यूम रखी हुई है। अच्छा, तो ये कपी कच्चू के बारे में, ये वात व्याधि में उसमें लिखा गया है कि वात व्याधि में का समन करती है और ये वाजीकरण है, एफ्रोडाइसिक उसकी एक्टिविटी है। वो पार्किंसन में भी काम आता है, उसमें डोपामिन मिलता है, ऐसा बहुत सारा है। लेकिन ये इमरजेंसी में भी काम आता है और उसको चरक संहिता सूत्रस्थान 24 विधि सोने के अध्याय है, उसमें
उसमें मद मूर्छा संन्यास जो व्याधि लिखी है उसमें संन्यास में उसका उपयोग किया गया है। मुझे 1.5 साल थोड़े साल पहले जयपुर में हमारे एक फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो 1.5 साल से कोमा में थे, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके लिए मुझे जयपुर जाना हुआ था और मैं वहां पे मैंने उसका प्रयोग किया था और उससे रिस्पॉन्स मिला था। तो ये जो संन्यास का जो की बीमारी बताई गई है उसमें लिखा गया है कि वाग दे मनसा चेष्टाम आक्षेप्यम अति बला मलह संन्यस्त बलम जंतु प्राणायतनम आशीस्तनम। इसमें ऐसा है कि अतिशय बलवान दोष प्राणी के वाइटल ऑर्गन्स में आश्रित करके और वहां की चैनल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और फिर ये ब्रेन स्पेशली ब्रेन के फंक्शन को वर्सली रिड्यूस हो जाता है। केवल रेस्पिरेशन चलता है, हार्ट बीट चलता है, लेकिन इंद्रिया कोई काम नहीं करती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, बोलना नहीं होता है, कोई मोटर सिस्टम काम नहीं करती, कोई सेंसर सिस्टम नहीं आती। तो इसमें चरक संहिता लिखते हैं कि उसमें शीघ्र चिकित्सा करना चाहिए, नहीं तो प्राण चले जाता है। तो उसमें संन्यास की चिकित्सा में लिखा गया है कि उसमें अंजन करना चाहिए। अंजन यान औपीडाश्च धूमाश्च प्रद्यमानानि च शुचिभितोदेन शस्त्रद्रा पीड़ा नखांतरे लोचन केश लोमना च दंतन दशनमेव च आत्मगुप्ता अवगर्षश्च यानी कि कपी कच्ची को घिसना। इसलिए तो अंजन में आप ऐसा कुछ नहीं, तो एक सिंधव का अंजन कर सकते हैं। सिंधव का अंजन मैंने बहुत हजारों लोगों को किया है। सिंधव का अंजन करना है तो बाजार से नहीं पाउडर नहीं लाना चाहिए, घर पे बनाना चाहिए। ये सिंधव को धूप में दबा दीजिए आधा घंटा 1 घंटा अच्छी तरह से, फिर उसको कूट के फिर उसको 2 बार छान के 2 बार उसको छान के फिर उसको सूक्ष्म बारीक माइक्रो पाउडर बनाना चाहिए। वो आंख में थोड़ा सा डालना चाहिए, करीब 10 मिलीग्राम से भी बहुत कम डालना चाहिए, बहुत कम पाउडर डालना चाहिए। इससे आंख से थोड़ी देर में जलन होती है, पानी निकलता है। तो ये तो तिमिर के लिए देते हैं, लेकिन वैसे भी ऐसे कॉमा आपके पास है तो दे सकते हैं। फिर अलग अलग प्रकार के धूम फ्यूमिगेट कर सकते, जो वनस्पतियां है वनस्पति का धूम का इस्तेमाल, जो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं करती, ऐसा कर सकते हैं। सूची भी तो नीडल से उसको पेन करना चाहिए अलग अलग जगह पर। शस्त्र दाह करना चाहिए, शस्त्र नहीं मिले तो पिपली, केवल लिंडी पीपल से पिपली से भी हम उसको दाह कर सकते हैं। गुल्प संधि के आसपास या अंगुष्ठ में कहीं भी करके भी उनको सेंसेसर वापस करना चाहिए। और उसमें चरक संहिता में लिखा है कि पीड़ा नखंतर है, जो नख की आभ्यंतर त्वचा है वहां पे सेंसर ज्यादा होते हैं। जैसे आप कहीं मॉल में जाते हैं तो जैसे उनके दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। वेइंग मशीन होता है तो वेइंग मशीन पर जैसे पैर रखते हैं तो ऑटोमेटिक उसका फिगर बता देता है आपका वजन कैसा है, क्योंकि वहां पे सेंसर रखा है। वैसे ही कुदरत ने हमारी नाक की दोनों हाथ और दोनों पैर के जो नख है उसकी आभ्यंतर त्वचा में सेंसर ज्यादा लगे, तो वहां पे आप पेन से पेंसिल से या कुछ नीडल से वहां पे पेन करते हैं तो ब्रेन जो हमारा इनएक्टिव हो गया है तो उसको एक्टिव होने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर लुंचनम केस लोमनम, बाल को खींचना चाहिए, हमारे रोमकूप को खींचना चाहिए और ब्रेन को फिर से एक्टिव करने के लिए। और दंत दशनमेव, दांत से उसको स्पर्श करना चाहिए। और लास्ट में लिखा गया कि आत्मगुप्ता अवगर्षश्च। इस तरह से मेरे पास ये 4-5 है, इसे बहुत खुजली आती है। ये जो कपी कच्चू की सेम है उसको पूरी की पूरी जो सेम है अब हमेशा हमारे पास ही रखनी चाहिए। ये ऐसे 3-4 दो लोग दो पैरों में जानु संधि के नीचे और दोनों हाथों में इस तरह से घिसते हैं तो उसका सेंसेसर बहुत होता है। आत्मगुप्ता का लेटिन नाम ही है म्यूकिना प्लूराइटिस। प्लूराइटिस मीन्स टू प्रोड्यूस इंटेंस इचिंग, उसको स्पर्श करने से ही जबरदस्त इचिंग आता है। तो ये कोमा के अंदर सेंस चले जाते हैं तो उसको फिर से एक्टिव करने के लिए चरक संहिता में दिया गया है। तो एक हमारे पास एक बेहतरीन ड्रग ये है कि हमेशा हमारे पर्स में होना चाहिए, तो कभी ना कभी ऐसा कोई मौका आ जाए तो हमें काम लग जाए। एक अच्छी चीज है आत्मगुप्ता के बारे में। संन्यास के बारे में आगे लिखा गया है, जो चिकित्सा लिखी गई है कि सुंठी और फिर
हींग उष्णा और या कुछ द्रव्य के साथ लेना, ये सारी प्रकार के चैनल्स को खोलने की बात है। जो भी ये सारे एफर्ट्स ये कि टू रिस्टार्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू वाइटल ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन को जो एनर्जी फिर से मिले और उसको दोबारा एक्टिवेट रिस्टार्ट करने की कोशिश के लिए ये सारे लिखे गए। मरीच के बारे में तो ऐसा लिखा गया है कि वो प्रमाथि द्रव्य है जो नीच वीर्यं यह द्रव्य श्रोताभ्यो दोष संचय प्रमाथि स्यात् ये तद्यत मरीचम, जो अपने निज वीर्य से अपनी शक्ति से स्रोतों में से दोषों का संचय को दूर करते हैं, वही वो प्रमाथि द्रव्य है। ये मरीच का उपयोग आयुर्वेद में बहुत है, हार्ट डिसीज में है, हार्ट डिसीज में, इंफ्लेमेटरी हार्ट डिसीज में, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज में है और इंफ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसीज में है, और इसका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी मरीच का उपयोग किया गया है। मैंने पिछले 2 लेक्चर में भी बताया था उषादी चूर्ण के बारे में। जो उषादी चूर्ण उसमें काली मिर्च ज्यादा होती है, उस प्रधान द्रव्य होता है और खुद बनाना चाहिए। तो ये उषादी चूर्ण के पैकेट्स ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ऐसे छोटे छोटे पैकेट उषादी चूर्ण के बटर पेपर में हमेशा हमारे पर्स में रहना चाहिए। चल मान लो आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं गए, अचानक किसी को कोई तकलीफ हो तो इमीडिएटली ये काम आ सकता है। कई बार पार्टियों में दे जाते हैं, ऐसा पार्टी में गए थे, वहां पे 3 कार्डियोलॉजिस्ट थे, फलाने आदमी को चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हम बचा नहीं पाए। उषादी चूर्ण एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, हमें हमेशा हमारे पास रखनी चाहिए, ऐसे में ये काम आ सकती है। दूसरा एक बात जो नस्य की बात है, जो संन्यास में प्रधान चिकित्सा में पहले ही बताया गया है कि नस्य करना चाहिए। तो नस्य प्रद्युम्न नस्य, जो शुंठी चूर्ण का, बच्चा चूर्ण का, ऐसा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अदरक, मैंने 2 चम्मच अदरक का रस है, 2 चम्मच जो दूध है मलाई निकाला हुआ, थोड़ा सा और उसको मिलाकर उसके 6 ड्रॉप्स दोनों नाक में डालो, तो भी ये जो कोमा में कोई है तो वो रिस्पॉन्स उसमें आएगा, क्योंकि नाक के अंदर भी सेंसर ज्यादा है, नाक के वाया नाक ब्रेन को जल्दी से आप एक्टिव कर सकते हैं। कई बार मुझे भी ऐसा बहुत बार ऐसा मौका मिला है कि कोई आदमी मृत हो गया है तो परीक्षा के लिए बुलाते हैं कि ये मृत्यु हुआ है कि नहीं, तो हम पल्स देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, और फिर हम टॉर्च डाल के प्यूपिल, दोनों आंखों में प्यूपिल डायलेट है कि नहीं वो देखते हैं। लेकिन एक और परीक्षा है कि इस तरह का अदरक का गुड़ या अदरक का रस और 2 चम्मच अदरक का रस और 2 चम्मच दूध मिलाकर जो नस्य बना है, वो 6 ड्रॉप्स आप नाक में डालो, आदमी जीवित होगा तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर आएगा। तो भी ये मृत्यु की परीक्षा है, और एक कोमा में कोई भी है और तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये मेरा आज का ये है कि आत्मगुप्त अवघर्षस्य इस तरह से प्लास्टिक के बैग में रखना चाहिए। अभी कपी कुच्चू जो हमारे खेतों में आसपास में उसकी वो होते ही है और मिल जाते हैं, ऐसे गाँव में मिल जाते हैं, तो अभी उसकी सीजन चल रही है, तो ये हमारे पास रखनी चाहिए। तो ऐसे कोमा में कभी भी किसी ऐसा केस आ जाए तो इसको घिसना चाहिए। एक साथ 3-4 कपी कच्चू की जो लेग्यूम है, दोनों पैरों में, दोनों हाथ में, एक आदमी दोनों पैरों में घिसे, एक आदमी दोनों हाथों में घिसे, और फिर साथ में नक की आभ्यंतर त्वचा है वहां पे पेन से या पेंसिल से पेन करे, ऐसे नाक में ड्रॉप्स डाले, उनका जो हेयर से उसको का प्रयास है, उसका जो ब्रेन को एक्टिवेट करने का प्रयत्न करे, इस तरह से काम करे, बराबर। तो ये कपी कच्चू के बारे में आज मुझे बताना था। हमने बहुत कौचा पाक और उसकी बहुत सारी, लेकिन ऐसा हम रेयरली देखने को मिलता है। तो मुझे एक पेशेंट में ऐसा करने को मिला था, यहाँ से मैं जयपुर गया था और वहां पे उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला था। तो एक हमारे वैद्य मित्रों को ये बात ध्यान में रहे, एक कपी कच्चू एक बहुत काम की चीज है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू विरल भाई शाह सर। आपने चिकित्सा एक अंग जो कि औषध, उसमें आपने कपी कच्चू के बारे में इतने अच्छी तरीके से उनका क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपका भी अनुभव हमारे साथ शेयर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आयुर्वेद परिषद की तरफ से मैं आपको करता हूं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के स्पेशल गेस्ट जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अश्विनी भार्गव सर
का मैं हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत करता हूं। इसके बाद आज के व्याख्यान डॉक्टर रविंद्र चुलीवरू सर, जो कि वारंगल से है, जो अपने स्नातक और अनुस्नातक कक्षाओं में भी स्टेट लेवल में टॉपर रहे हैं। अभी वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है इन द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन तेलंगाना। वो किक ऑफ में नेशनल ट्रेजर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ स्पेशली उनकी ख्याति इसलिए है कि वो स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र जैसे विषय में भी अपने इनोवेटिव व्यूज रखते हैं। उन्होंने सुप्रजाता हेल्दी प्रेगनेंसी अवेयरनेस एवरी ईयर प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। साथ साथ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के भी वो प्रणेता है। साथ ही साथ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे तेलुगु प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स में भी पीरियोडिक स्पीकर के तौर पर अपनी भूमिकाएं अदा की है समय समय पर। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया है, साथ ही साथ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की है। उनके बुक का नाम है आयुर्वेद एंड यौगिक प्रसूति तंत्र। इस बुक को भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रस्तुत किया है। तो ये भी बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है। तो ऐसे डिस्टिंग्विश्ड हमारे स्पीकर है आज डॉक्टर रविंद्र चुलीवरू सर। मैं उनका हार्दिक अभिवादन एंड स्वागत करता हूं। ओवर टू यू सर, आप आज का व्याख्यान की शुरुआत करिए। Yeah, good evening, everybody. Good evening, sir. Please proceed, sir. May I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Very much audible. You can see the PPT also, no? Can you see the PPT? सर वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। नीचे है ना, जैसे एक आइकन है 3 बिंदु के पास, प्रेजेंट नाउ, वो कर दीजिए आप। अब देखिए। हाँ जी। इट्स ओके? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही है। हाँ। डॉक्टर हार्दिक दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है इधर। नो मैडम, नहीं आई है अभी। हाँ, ये जो प्रेजेंट नाउ है ना सर, वो करना पड़ेगा। ये दिख रहा आपको? हो नहीं रही सर अभी। सर ऐसा करते हैं, मेरी ईमेल मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, आप है ना उस पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं यहाँ से चला दूंगी, है ना। मैं आपको ईमेल करती हूँ। डॉक्टर हार्दिक, तब तक अश्विनी जी भाई साहब का एक बार उद्बोधन करवा लो, है ना। हाँ, मैं तब तक करती हूँ। ठीक है, ओके जी। इसमें है ना आसानी से जी सर। नीचे दिखना शेयर स्क्रीन है, सब नहीं दिख रहा मुझे। सर सबसे नीचे है सर, ये रेज हैंड है, फिर टर्न ऑन कैप्शन है, फिर प्रेजेंट नाउ है, उसको सर करना प्रेजेंट नाउ है, हाँ जी, उसको क्लिक करिए सर। या हाँ, पीपीटी पहले एक ओपन करके नीचे रख लीजिए सर, जैसे आइकन आपका है ना पीपीटी ओपन का, वो सर उसमें दिखेगा। दिखा क्या? या सर आप है ना मुझे, मैं ईमेल करती हूँ, तब तक अश्विनी जी भाई साहब का उद्बोधन करवा लेते हैं, और मैं यहाँ से शेयर कर दूंगी। आप मुझे कहेंगे ना कि नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं आगे कर दूंगी सर। इसमें भी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? डॉक्टर हार्दिक आप वो करवा लीजिए, मैं सर को भेजती हूँ ईमेल, है ना। हाँ 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 जी 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 मैडम। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है ना, अभी जस्ट थोड़ी मिनटों में हम अपने मूल व्याख्यान पर वापस लौटेंगे। तब तक
मैं हमारे इस कार्यक्रम के आज के व्याख्यान के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अश्विनी भार्गव सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। सर, आप रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय से आपने अपनी स्नातक कक्षा की पढ़ाई की है। आप अभी एज ए प्रोफेसर रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में विभाग में कार्यरत है। इसके अलावा सर विश्व परिषद नेशनल जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी आप कार्यरत है। तो सर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। ओवर टू अश्विनी भार्गव सर। नमस्कार। आवाज आ रही क्या? हाँ जी सर। डॉक्टर हेतल दवे जी, डॉक्टर बलदेव धीमान जी और आज के वक्ता विरल शाह जी और डॉक्टर अरविंद जी, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने आज मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य दिया है। मुझे याद है जब से यह स्टडी सर्कल जो है वो शुरू हुआ था, तब मैं जयपुर में ही थे। हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी 2015 शायद, और उस समय से अब तक निरंतर यह प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और उस पे बहुत सारे पीजी स्कॉलर्स ने, पीएचडी स्कॉलर्स ने इस पे पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे ढंग से आज ये 274वां 274th मुझे लगता है कि आज के उद्बोधन जो है, और इसके लिए मैं डॉक्टर हेतल जी को और एनआईए का जो विश्व आयुर्वेद परिषद की कार्यकारिणी है उन सबको साधुवाद देता हूं कि निरंतर इसको चलाना और हर समय इसके लिए अच्छे अच्छे वक्ताओं को ढूंढ के लाना। और आज भी जो अभी तक मैंने सुना, विरल शाह जी ने भी अपनी बहुत ही प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो हमारे सामने रखी हैं। और इस प्रकार से अगर हम ऐसे उद्बोधन और ऐसी जो इस लेवल का जो कार्यक्रम है जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उससे हम सबको बहुत हम लाभान्वित होते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि विश्व आयुर्वेद परिषद पूरे भारतवर्ष में इस समय काम कर रहा है। लगभग 20 ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर हमारी कार्यकारिणियां बन चुकी हैं। अभी रिसेंटली पुडुचेरी के अंदर भी अपनी कार्यकारिणी जो है उसकी भी घोषणा हो गई है। अंडमान निकोबार में भी अपने मेंबर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अपने मेंबर्स हैं। इसलिए विश्व आयुर्वेद परिषद का जो ये पैन इंडिया हम लोग काम कर रहे हैं, उसके आप सबका सहयोग जो है वो बहुत ही अपेक्षित है। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी या जितने भी कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब विश्व आयुर्वेद परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उन सब के मन में एक ही बात जो अभी यहाँ भी हम इस खास करके जो स्टडी सर्कल है उसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद जो है वो पूरे भारतवर्ष की आधिकारिक चिकित्सा प्रणाली बन जाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उस सब प्रयासों के लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि विश्व आयुर्वेद परिषद हमेशा ही ऐसा सोचता है कि जितनी भी आयुर्वेद की फर्टर्निटी है उसकी अच्छे ढंग से ट्रेनिंग हो, उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं तो हम सब मिलके उसको दूर करें। जैसे अभी सर्जरी के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो काम किया है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है, उसके ऊपर आईएमए ने भी बहुत कुछ विरोध भी किया है। हालांकि हमारे सामने ऐसा विषय भी आया कि हमें आईएमए का विरोध करना चाहिए, ओपनली करना चाहिए, लेकिन हम सब ने जब नेशनल लेवल पे विचार किया तो हमारे में ध्यान में आया कि हम अपनी लाइन को लंबा खींचें। किसी का विरोध करने से कोई लाभ नहीं होता है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमने उसके लिए सर्जरी विभाग के जितने भी प्रोफेसर, टीचर्स, पीजीज, उन सब की एक बैठक की, जिसके अंदर उन सब के द्वारा जो बातें हमारे सामने आई
उनको आगे और बढ़ाने के लिए विश्व परिषद जो है वो काम करेगा। ऐसे ही जितनी भी फर्टर्निटीज है, जितने भी अपनी फैकल्टीज है आयुर्वेद की, उन सभी के माध्यम से उनको अलग अलग से बिठाने का प्रयास भी हम सब लोग कर रहे हैं, जिससे कि हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो काया चिकित्सा है, चाहे सर्जरी है, चाहे ईएनटी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट जो अपना है, उसके टीचर्स, उसके प्राध्यापक अलग से बैठे और उसके ऊपर चिंतन करें कि आने वाले 5 साल में हम अपने सब्जेक्ट को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, जो उसकी पॉजिटिविटीज हैं उसको किस प्रकार से सबके सामने लाएंगे। तो ये काम विश्व परिषद लगातार कर रहा है और अब इस दिशा में और तेजी से हम सब बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, जो भी यहाँ से मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप अपना जो समय है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना समय का जो योगदान है वो दें। बाकी सब तो हम करते हैं, हम कितना समय दे सकते हैं इसकी चिंता हम लोग अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आयुर्वेद पीछे रहने वाला नहीं है, और भारत बल्कि पूरे विश्व में, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी हम सबकी कामना है। तो आप सबको फिर से मैं शुभकामनाएं देते हुए आपको फिर से साधुवाद देता हूँ। जो अपना स्टडी सर्कल एनआईए का है वो अपने सभी के लिए एक जो कह सकते हैं कि एग्जाम्पल बना हुआ है। इसको देख के हर जगह हम सब अपने स्टडी सर्कल बहुत सारी जगह पे शुरू भी हुए हैं, लेकिन जितना अब ये लगातार ये स्टडी सर्कल चल रहा है उसके लिए इसकी पूरी टीम को साधुवाद, स्पेशली डॉक्टर हेतल को, और जो भी कार्यकर्ता इसको करने के लिए जुड़े हुए हैं उन सबको मैं साधुवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आज हम 274वां जो आज का जो विषय है उसको सबके सामने रख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस विषय पर प्रकाश डाला। इसलिए अभी मे बी स्लाइड शेयर हो गया है, तो हम अपने मूल व्याख्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं हमारे आज के मुख्य व्याख्याकर्ता डॉक्टर रविंद्र चिलवेरू सर से निवेदन करूंगा कि वो अपना व्याख्यान की शुरुआत करें। ओवर टू रविंद्र सर। डॉक्टर हार्दिक, वो डॉक्टर दीक्षा को ही बुला लीजिए, हो सकता है ना, वो मैं सर को फोन करके एक बार पूछती हूँ, है ना, क्योंकि सर का है ना ईमेल से भी वो पीपीटी आई नहीं है अभी। तो हाँ जी, कुछ शायद अपलोड होने में, ईमेल को अपलोड में कई बार थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो डॉक्टर दीक्षा का उद्बोधन करवा लीजिए एक बार, है ना, मैं करती हूँ जी। जी। सॉरी, अभी मैं डॉक्टर दीक्षा मैडम को निवेदन करूंगा कि वो आए और इस विषय पर थोड़ा हम लोगों को अनुग्रहित करें। तो ओवर टू डॉक्टर दीक्षा मैडम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आए और इस सब्जेक्ट पर थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन करें। ओवर टू डॉक्टर दीक्षा मैडम। Thank you so much, Dr. Hardik. It's my pleasure to be here as a Vishesh Atiti, first of all, and my special regards to Dr. Baldev sir and Hetal ma'am कि मुझे उन्होंने इस पद के लिए चुना है आज के लिए, तो थैंक यू सो मच मैम। और डेफिनेटली हम विश्व आयुर्वेद परिषद की अगर बात करें तो जो हमारा मेन एम है विश्व आयुर्वेद परिषद का कि आयुर्वेद को भारत की मूल चिकित्सा पद्धति घोषित करना, तो डेफिनेटली इस फील्ड में या इस तरफ हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं भी ये सभी स्टूडेंट्स
जितने भी टीचर्स यहाँ सुन रहे हैं उनके स्टूडेंट्स को वो एनकरेज करें, उससे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें भी ऐसे आगे आना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आयुर्वेद ने हर मोमेंट पे, हर कदम पर अपनी सार्थकता सिद्ध की है। जैसे अगर हम बात करें कि पहला जो समय था वो कम्युनिकेबल डिजीज का एरा था, और प्रेजेंट एरा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। तो अगर हम बात करें कि जो एक मेडिकल सिस्टम है वो भी धीरे धीरे भी आयुर्वेद की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है, और आयुर्वेद ने जैसे जैसे अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है, अपना यूजफुलनेस सिद्ध की है, तो कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें पिछले समय में पत्रिका जो है उन्होंने जो सर्वे करवाया उसमें भी आया कि लगभग 68% यूथ चाहता है टू टेक आयुर्वेदा एज अ फर्स्ट ऑप्शन। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि ये एक ऑप्शन हम जो आजकल हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर देखे जाते थे उसे हम फर्स्ट चॉइस बन रहे हैं। कोविड-19 के टाइम में भी जैसा कि आपने देखा है कि आयुर्वेद में हमने अपनी सार्थकता सिद्ध की है। पीएम मोदी जी ने भी लगभग हर लेक्चर में या उन्होंने जो भी अपने प्रबोधन दिए उसमें भी हर में उन्होंने आयुर्वेद को जरूर मेंशन किया है। कहीं ना कहीं एक हमें वर्ल्ड वाइड जो है रिनाउंड मिली है कि हमें लोग पहचान रहे हैं, आयुर्वेद को पहचान रहे हैं। और अगर हम बात करें जैसे कि डॉक्टर विरल सर ने भी बताया कि जो ड्रग्स की इमरजेंसी में भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद प्रेजेंट एरा जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का है। तो अगर हम बात करें तो वहां पर भी आयुर्वेद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है शुरू से, क्योंकि अगर जैसा हम बात करें कि डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या थायराइडिज्म है, इसकी मेडिसिन जो एलोपैथी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो हमें लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ रही है, और उनका फर्स्ट टैगलाइन ही होता है कि ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन वहां भी अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कोई बेसिक बिल्कुल हर्बल ड्रग से आयुर्वेद में बहुत ही डायनामिक काम वह करता है। ऐसी बहुत सी चीज है, मैं क्योंकि गायनी की हूँ तो गायनी में स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया है फील्ड में कि ऐसी बहुत सी डिजीजेज हैं जहां पर आयुर्वेद डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस है पेशेंट्स की। तो और पेशेंट्स की होनी भी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां वो ऑपरेशन सजेस्ट कर देते हैं, दे यूज टू गिव हार्मोन्स जिससे हम प्रॉपरली पेशेंट बॉडी जो है वो अकोमोडेट नहीं कर पाती है, क्योंकि हम नेचुरल बॉडी हमारी नेचुरल चीजों से बनी है, तो वहां कहीं ना कहीं हमें हर्बल ट्रीटमेंट ही फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हमारा होना चाहिए। तो बस आज का एज अ विशिष्ट अतिथि टेक होम मैसेज मेरा यही है कि ट्राई टू मेक आयुर्वेदा एज फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज, और ये हम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। यहाँ हम अभी मुझे मिला के 53 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर हम 53 लोग भी ये एक ओथ ले लें कि हम फर्स्ट चॉइस ऑफ जो ट्रीटमेंट हमारे घर में या खुद के लिए अगर हम आयुर्वेद को लेंगे, तो हमें देख के हमारे फैमिली मेंबर्स, जो कि मैं मोस्टली मेरे घर में ऐसा करती हूँ, डेफिनेटली अब धीरे धीरे मुझे भी आयुर्वेद में आई एम सिंस 2006, तो इन सालों में मैंने ये एक परिवर्तन फील किया है कि जो जिनसे मैं मिल रही हूँ मेरे घर वाले या जिनको मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट उनका आयुर्वेद हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिकता में इन सालों में डिफरेंस आया है। तो एटलीस्ट हम ये 52 लोग अगर ये ओथ आज ले लें कि खुद पर भी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद रखेंगे, प्लस हमारे मिलने वालों को अगर हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें आयुर्वेद देना चाहेंगे, तो हम धीरे 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 इस मोमेंट में आगे बढ़ के और बहुत डायनामिक रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हार्दिक, डॉक्टर हेतल मैम, डॉक्टर बलदेव सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू वर्क फॉर, या मी एंड माय हस्बैंड विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क फॉर आयुर्वेदा टिल आवर लास्ट ब्रेथ। तो बाय टेकिंग दिस ओथ आई विल एंड माय वर्ड्स। ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। मुझे लगता है स्क्रीन भी प्रेजेंट हो गई थी बीच में, तो आई थिंक अब हम हमारा मेन लेक्चर अब कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ओवर टू यू डॉक्टर हार्दिक। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम, इतने अच्छे मैसेज के साथ अपने अपना नोट्स पूरा किया। अब हम जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्तव एज अष्ट धातु, तो उस व्याख्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं सर से फिर से निवेदन करूंगा, डॉक्टर रविंद्र सर प्लीज आप इस घनिष्ठ विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इस विषय को हमारे लिए है ना इजीली हम समझ सके, इस तरीके से आप समझाने की
कोशिश करिए, क्योंकि आर्तव को एक अष्टम धातु के रूप में ना स्वीकार करना एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है हम सब के लिए। तो मैं डॉक्टर रविंद्र सर से विनय निवेदन करूंगा कि वो आए और इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ओवर टू यू रविंद्र सर। मैडम आपका मेल कब भेजा था मैं? सर यहाँ मेरे पास तो आई नहीं, मैं ऑनलाइन ही हूँ, मैंने बहुत बार फ्रेश भी कर लिया। अभी तो सर हो गई थी एक बार, तो पीपीटी प्रेजेंट हो गई थी सर। सर आपकी पीपीटी अभी प्रेजेंट हो गया था, अब एक बार अगर फिर से ट्राई करेंगे, प्रेजेंट नाउ पर आप जाइए और आपकी स्क्रीन जो है वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। हाँ हो गई सर, प्रेजेंट हो गई। जी सर, अभी आप जहाँ पर आपकी पीपीटी है, आप वो वाला ब्राउजर आपके कंप्यूटर पे खोल दीजिए। हाँ, इसको क्लिक कीजिए सर नीचे। जी सर, और अभी आप हाँ यहाँ से प्रेजेंट कर दीजिए। इसको क्लिक कर दीजिए सर। जी सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। नो, सर आप राइट साइड में नीचे जाएंगे तो आपको आपका माइक नजर आएगा। तो इससे नीचे जाइए सर, यहाँ पे। लेफ्ट में, राइट में नहीं। जी सर, अपनी स्क्रीन पे जहाँ से हम अपनी विंडो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप हेयर टू सर्च, आप वहां पर जाकर के अपने माउस को थोड़ा नीचे कीजिए। जी, यहाँ से आपने ये सर आपका अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। और अभी आपकी पीपीटी पर चले जाइए सर। ये नहीं यहाँ पे नहीं सर, आपके जो नीचे देखिए, आपके नीचे आ रहा है। जी सर, जी जी, और इसको फुल स्क्रीन पे कर दीजिए सर। जी, इज इट ओके? हाँ ये ओके सर, आपकी आवाज भी आ रही है सर, और आपका पीपीटी भी सर शो हो रहा है। So we are at comfort zone now. जी हाँ, यस सर। So sorry for the inconvenience. So I am very happy to be with you, particularly Vishawa Ayurveda Parisad. I am also an active contributor from the Dakshina Kshetra. I am acting as a Dakshina Kshetra Prakost.
I belong to Telangana and I am retired principal and formerly the HOD of the Prasuti Sriroga department from BRKR Government Ayurvedic College, Hyderabad. So this is my introduction in gist, and we have already heard my introduction in detail. So as you see, the topic is clinical implications of Artava as an Ashtama Dhatu. So why I said implication is, as I am announcing, rather reconstructing the concept of Bhava Prakasha directly, or else a image created from the Susita Sharira as well as the Ashtanga Sangraha. So with that hope, I am trying to rebuild up the concept of Artava as an Ashtama Dhatu. And the significance of Artava in the practice of Prasuti Sri Roga, is it not? It is not so importantly visible in Samhita, and there is essential need to expand the and illuminate the knowledge on Artava. Till today, so many pioneering teachers and presently the junior teachers also mostly expressing in their writings as well as in their teachings, they are calling Artava as only Upadhatu. So that is why I am starting from here. So how it is a conflict. That is why I have questioned myself when I was studying undergraduation. So how this Upadhatu is going to help in a complex process of the fertility. So that is why I am raising first 4 questions prior to entry into the explanation of the subject. The first question is it right to accept a rasa or raktas upadhatu artava participating in a complex and incredible act of garbhavakranti? That is my first question. It could be my question when I was undergraduate, or maybe a question even for today's undergraduate. Second question is it wrong if we accept Artava as a 7th Dhatu in place of Shukra in the chain events of Dhatu Parinama of a woman? And the third question is, why don't we dare to readily incorporate Artava as a 8th Dhatu in the same chain events of Dhatu Parinama with a special reference to womanhood, like Ashtamo Garbhashaya? So there were 7 Ashayas and added with the 8th one Garbhashaya, said as Ashtamo Garbhashaya. And last one is Sri Bija a component of Artava or Kshetra? So these are the questions for the beginners and even today's junior faculty getting such doubts and without any clarifications either from the experienced teachers or the pioneering teachers also. So as usual, so am I audible? Hello? Yes, Hello? sir. Am I audible? Hello? जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल Right. ऑडिबल है सर. Yeah, everything is in tune. Right. हाँ जी सर, जी सर. So this is, yeah. So this is the simplest slide. This is a Sapta Dhatu depicting the Sapta Dhatu theory both in man and woman. In man, it is a simple as usual Sapta Dhatu from Rasa to Shukra. Whereas in woman,
there is a complexity at the end, as a question I have raised in the beginning. So till Shukra, the same aspect as we see in the man, but at the same time, this question too arises, why only is the Shukra Sapta Dhatu, why not the Artava? And there itself another complex, that is uh, Majja could be the origin both for Shukra as well as Artava simultaneously. Mean to say, the Majja is giving two Uttara Dhatus, one is Shukra in male and Artava in female. That is one concept. The other is Majja is giving both for Shukra as well as Artava. So thus Shukra next is Artava as the Ashtama Dhatu. So that is my contention here. So the main idea behind the main Aptavachana for this is from Sushrita Sharira 14/14. Masena rasaha shukri bhavati strinam cha artavam. So this is the main rhyme. Give me a thought to add Artava as an Ashtama Dhatu. And in the further slide, I would like to project the Artava concept in 4 dimensions with an physiological understanding. That is, the first one is Dhatvartam or Mula Dhatvartam or Pradhana Artava Dhatu. The second one, as usual, many are thinking Upadhatu Artavam. And third one is Malina Artavam, and ultimately the Bija Artavam. So we used to see, we used to hear during the teaching, Artava can be deployed in these 4 dimensions. Various references we come across from various contexts of various samhitas. But ultimately, these 4 dimensions we can observe. However, for every form of Artava, the spearheader, the leader is always the Mula Artava Dhatu. So that is the concept of our ingest. And these are the different references or Aptavachanas. Why I have raised the questions and where I would like to show my ideas, my thoughts at this juncture in this presentation. So that is Rasadeva Striya Raktam Rajasanyam Pravartate Tadvarsha Dvadasha Dudam Yati Pancha Shetakshayam, a well-known stanza. Here the commentator Dalhana is Rajaha Sanya iti Sanyantaram etat striri yoni pravrittasya raktasya Rutukalajam raktameva rajasanyam uchyate. This is Dalhana's comment. Whereas by Chakrapani, etacha rajorupam raktam rasajanyam api dhatu shonitavat na shigram jayate kintu shukravat masenaiva. So here the complexity as well as query arises and the enigmatic situation also arises. Whether the Artava Dhatu is synthesized from Rasa Dhatu directly into Rajo Dhatu, while the formation of Rakta Dhatu. So for that usually it takes the time takes from one dhatu to the other, as said in Sushrita Samhita is, so usually 3000
15 kala. So with that sense, it is the next one as an upadhatu only. Whereas the Chakrabarti's commentary showing that, so it is not the same time. What he said, Rasajanyam api dhatu shonitavat. Na shigram jayate. It is not going to be formed within 3015 kalas. Kintu shukravat masenaiva. So it is further showing that the so-called Raja or Artavam is synthesized at the end of Dhatu Parinama simultaneously with the formation of Dhatu Shukra. So therefore here, whether it is a Dhatu taking whole time of almost 3015 into 6 dhatus, previous dhatus, that is up to Majja. So summation to 18,090 kalas. So kalas, as you know all very well, it is the summation of one Unmesha Nimesha. Or rather we can say a second for understanding. So therefore here Chakrabarti's view signifying that the so-called Raja or Artava is not the so-called Dhatu or Upadhatu which is coming along with the or while formation of the Dhatu Rakta. So etacha Rajorupam Raktam Rasajanyam api Dhatu Shonitavat na Shigram Jayate. Kintu Shukravat Mase Naiva. So it is taking the so-called 18,090 kalas signals 1 month. So it is tabulated, it is calculated. So thus the next Aptavachana is Sakalu Trini Sahasrani. The number what I am saying is from Susrita. The reference is Sakalu Trini Sahasrani Pancha Dashacha Kala Ekaikasmin Dhatvavatishtate Evam Masena Rasah Shukri Bhavati Strinam Cha Artavam. So earlier I have reminded this Masena Rasaha Shukri Bhavati Strinam Cha Artavam. So Cha indicating and the Shukri Bhavati as well as Artavam Bhavati. So thus as I am assuming and I have understood the earlier Dhatu to Shukra is Majja. So Shukra is formed from the Majja. So also Artavam also derived from the same Majja. So thus Masena Rasaha Shukri Bhavati Strinam Cha Artavam. So Shukra as well as Artava is derived from the Majja. And as these are running along with the Rakta, because Rakta with a Rasa or Rasa Rakta, the blood, is also carrying the so-called Drava Dhatus such as Shukra as well as Artava. So they also carry the same Rakta Lakshana. That may be the reason why here Artava said to be Rakta Lakshana. But at the same time, the significance is given. It is not simply Rakta, but it is causing the pregnancy. Garbhakrut Cha. The added feature is given there. So therefore, the so-called Drava Dhatu Artavam along with the Shukra also, it is also Drava, and which is also said later as Stri Shukram. It is also present in the Stri. So therefore, there is no controversy of Saptadhatu theory even in woman. But these two are circulating along with the Rasa Rakta Dhatu, so carrying by its Lakshanas or features. So thus
this whole Rasarakta is running all over the body, because later it is also said that the Shukra is and Artava is having a tendency to circulate all over the body. It is spread all over the body also. So thus, as it is running along with the Rasarakta, so also it carries the features, say color, complexity, etc. of the Rakta Dhatu. So this is the Aptavachanas, why we are thinking the Sushrita, the Shukra as well as Artava separately and particularly in women. So these are few more references. Tada Raktameva cha Strinam Masaya Mase Garbhakostam Aprapyam Trayaham Pravartamanam Artavam Mityahu. So how the Garbhashayagata Artavam is taking place. This is from Ashtanga Sangraham, and the Hindu Vakya detailed it. How? So Bahi Pravartamanatvam Tasya Upalakshanam. So what he said? Say the exit of that Artava is only a Upalakshanam, Gauna Lakshanam otherwise. So it is a replica. So therefore, the menstruation or the Artava coming out of the vaginal tract is only an Upalakshana or Gauna Lakshana to the Mula Dhatu in the body that is circulating all over the body, which is Adrishtartavam. It is not Drishtartavam, but Adrishtartavam, invisibly spread all over the body. So here it is further clarified by Hindu. Natu Artavam yet pravartate eva kevalam. He has clearly cleared the doubt. So whatever coming out of the vaginal tract is not the Artavam. Natu Artavam yet pravartate eva kevalam. And similarly, further he clarified Rutau bhavati Artavam Rutustu Nishiktasya Bijasya Palaprasavanuguna Kalaha. So here it is reflecting the Adrushta Artava Mula Dhatu as well as Malina Dhatu as well as the Bija Artavam also, Bija Dhatu also. How he said Nishiktasya Bijasya Phala Prasava Anuguna Kalaha. Like that, he has defined the Rutu. So therefore, the Rutu itself can be again here reflects in two ways. It could be a Rutu Kala and Anrutu Kala also. Somewhere Dalahana cleared it. Total Rutu Chakra again divided into Rutu Kala and Anrutu Kala or Rutu Vyatita Kala. So thus the whole Rutu Chakra or Rutu menstrual cycle reflects not only the menstrual cycle or endometrial cycle, but also the ovarian cycle. Why? Because the bija is embedded in the bija ashaya. So the noun form or the word bija ashaya is clearly mentioned in the anatomical aspect also. So thus, this whole phenomena is reflecting the total physiology of Artava. And then after Evam Asena Rasaha Shukri Bhavati Srinam Cha Artava, just I was saying. Here one more reference. Srinam Shukram na Garbhaya Bhavet Garbhaya Cha Artava. So here he emphasized on Stri Shukram also. So not to forget about the Saptama Shukra Dhatu. So thus the Aptavachanas are giving almost straight away. There is no disguise. The clarity on Ashtama Dhatutva for Artavam. So here we can see, as I told just now,
Definitely, the Malinartavam or the Bahipushpam is a replica or a Gauna Lakshana for the Abhyantara Ardhava Dhatu or Adrishtartavam, and we can make a tabulation like this. Say Malinartava, the visible part of the Artavam, it is also called as Purana Dhatu, and the Mula Dhatu is said as Prasada Dhatu, or it is derived from the Majja, hence Prasada, Uttara Dhatu, Prasada Bhaga of the Artava, and Rasa, Malina, it is Rasa Dhatujam. Why? Because it is coming from the Rasavaha Srotas or Bijavahini or Artavaha Damanya, whereas the Dhatvartavam is from the Dhatu Parinamajanyam. Similarly, the Malinartavam is taking only a short time, that is within 5 days, and whereas for Dhatvartavam it is taking 1 month or 18,090 kalas, and Malinartavam is said as Bahipushpam, whereas Dhatvartavam is Antarapushpam, and Malinartavam is having Rakta Lakshanas. So Dhatvartam is said as Bija Raktam because it is generating the Bija in the Bija Ashaya. So similarly, Rajasanyakam Malinartavam, and whereas the Dhatvartam is having a characteristic of Bijotpati, hence Bija Dharmini. Malinartam is a Yoni Pravartakam, whereas Dhatvartam, as I said, it is Adrishtam, not Drishtam. So Malinartavam, again, it is from directly Stri Raktam, as it is coming from the Rakta, better you say Rasavaha Srotas, and the Mula Dhatvatvam is having a special characteristic of Garbhadanakaram. So thus we have many characteristics different from this visible Artavam or Rajas from the Mula Artava Dhatu. So that is why we are saying the Mula Artava Dhatu also as a Pradhana Dhatu Artavam, whereas the visible part of menstrual blood or Rajas, it is only a Upalakshanam, or it is a replica of the Adrishta Mula Dhatvartavam. So similarly, we have got two more dimensions in the name of Upadhatvartavam Artavam as well as Bijadhatvartavam. So thus here you can see Upadhatvartavam directly synthesized from Rasadhatu during the formation of Rakta Dhatu or Rakta Dhatu Parinama. Whereas during that time, Bija is always a Nishiktam. So Nishiktasya Bijasya, that reference we can carry here. Similarly, its Bijartavam is lodging in the Bijashaya. So here the time taken for Utpatti of Upadhatartvam could be only not more than this 5 days or 3015. So there it is taking long time. So like that it goes. But here I would like to focus the Murtitva of Pradhana Dhatu as well as the Upadhatu. So many a times we are enumerating the word Upadhatu during the formation of conception. But at this juncture, I would like to spell the Upadhatu in a different dimension, because the term itself is Upa. It is a supporting Dhatu for the Mula Artava Dhatu. So in what way it is supporting is the criteria. So the functions of Mula Dhatu is primarily Garbhakrut. So of course, prior to that, it is Artava Pravartakam also, or Rutu Sravakaram. So Rutu Pravritti as well as Garbha Karanam are the prime functions of Mula Artava Dhatu. Here in the form of Upa Artava, because here terminology is commonly used, because
all these 4 dimensions are interrelated. Hence, probably the word Artava is given to all the dimensions. Here, as a Upadhatu, it is supposed to support the Mula Artava Dhatu. So, Mula Artava Dhatu functions are Artava Pravritti as well as Garbhakaram. So, therefore, the Upadhatu is supposed to support these basic 2 functions of Mula Artava Dhatu. So, how? So, it is helping in the act of cohabitation by giving secretion from the Rasa Dhatu or Rasa Vahini at the beginning of vaginal tract or the extroitus of the vaginal canal or the vaginal orifice. So probably the Bartholin secretions are considered here as under Upadhatutvam. Why? Because it is helping in the cohabitation. Because cohabitation is also a part and parcel of the Garbhakaranam or Garbhadhanam. So then after this bija in the Shukra Dhatu requires capacitation at the Garbhashaya Mukha Chidra or the uterine os or ultimately the cervical os. So here the Shukra bija is capacitated, and for capacitation the cervix is supposed to secrete special secretions which are coming from the same circulation or rasavaha srotas or rasadhatu. So thus it is helping again in the process of Garbhadhanam. And third one is ovulation. So in the ovulation, during the process of follicularization, there is collection of follicular fluid or like a folliculi. So it is also a type of fluid helping in the process of ovulation, then after the process of Garbhadhanam. And it is also coming from the Rasa Dhatu or Rasa Vahini supplied to the Bijashayam. So therefore it is helping the main function. It also can be considered under Upadhatu. Similarly, transportation of both the Shukra Bija as well as the Artava Bija throughout the cervical canal, uterine cavity for Shukra Bija, whereas in the Artava Vahasrotas or Bija Vahini we are saying. So oviducts. So there also certain moisture secreted in the tubes are required to nourish not only the ovum but also the fertilized ovum. So those secretions are also very essential. Thus, the helping or supporting tendency of the circulatory secretions from Rasa Dhatu is helping the total process of Garbhakrut. Therefore, it is there, Upadhatu. And then onwards, the unification, the formation of zygote. So there also you require the nutrition for the zygote, and then after implantation. So for this concept, there is a decidual formation in the uterine cavity. The endometrium turns into decidual reaction, then into a spongy, almost it is like a sandwich. So where there is a blood pool or the pooling of the Rasa Dhatu, wherein the zygote baths and where the Upasneha and Upasveda takes place. So the so-called transudation, a type of circulation is formed, which is also coming under the same Rasa Dhatu and the Artava Upadhatu. So thus, during its
growth and development of the zygote also, what we are calling growth and development, or transformation of the early embryo into embryo, then into fetus, what we call the Garbhavakranti. Kudika Garbhavakranti and Mahati Garbhavakranti, during which the Rasa Poshana, again the same word. So thus the nutrition is helping, and similarly as a process of transformation there is also amniotic fluid collection, which could be again from the Rasa Dhatu only. So thus the total process of Garbhadanam, then Garbhavakranti, is entirely supported by the so-called transforming Upadhatu of the Artava. So this is my belief, my standardization to make the Murtitvam of the Upadhatu Rupa Artava. So similarly, we know very well about the Bija Artava. So as it is in the Bija Ashayam, so here I have raised one question, whether Bija Artava here is only a Bija or it's a Kshetra. So when the mother herself is a Kshetram and the genital organs in the mother is a Kshetram, the ovary in the genital organs is a Kshetram, and again the graphican follicle in the ovary is a Kshetram. So therefore the component of the ovary or the graphican follicle, so instead of calling as a Bija, better always it is a Kshetra. So even during the zygote formation also, this Shukra Bija is sowing into the ovum. So thus it is reflecting the Bija Kshetra Nyayam also. So therefore I always consider this three Bija as a Kshetram, because it is a unit of the three Sharira Kshetram. So that is my concept, because it is also having a Bija Prasava, Nishiktasya Bijasya Phala Prasava. So here Bijosarga itself is resembling a miniature labor. So that is why we here, and even Aptavachana also saying it as a Bija Prasava. And later, definitely the Mula Dhatu is playing its role in this Bija Prasava. And not only that, for the formation of this Bija, and formation of Bija itself reflects the today's modern theory of stem cell theory. So the basic stem cells are said to be migrated from the bone marrow. So what our acharyas narrated is equally true, because both the Shukra Bija as well as the Artava Bijas are generated from the Majja Dhatu. So therefore, saying Artava Dhatu as an Ashtama or the 8th Dhatu is not a wrong, even as per the today's modern science. So the primary cells are thus migrated from the Majja, and there are certain biosenses that the bone marrow transplantation initiated in those people the genetic mutation also. For genetic mutation, definitely we always talk about the Shukra and Artava Bija. So as our theory reflects, so the Shukra and Artava Bijas are generated primarily from this Majja Dhatu,
So what today's science is saying. So thus, definitely, we are not the system of sister concern, but grandpa concerned to the allopathic modern science. So thus, in this way, I would like to substantiate the Artava Dhatu, particularly the Mula Artava Dhatu as an Ashtama Dhatu in all the dimensions. So not only in the Bijartava dimension, but also in the hormonal concept also, or the gonadal steroids. Why? Because we have certain examples resemble the growth and development of a woman is like a lotus. So the Rajo Pravritti is said to be in between 12 and 50 years at an average. But the female fetus is already built up with the Matrubhava predominantly. So definitely there is every possibility for this Artava even before the days of Rajo Pravritti. So that's what we are calling Adrushtartava. So therefore here the Drishtartava or Malinartava is at an average only in between the 12 to 50 years. Prior to this age group and even after that, there is always Artava Dhatu in the female, but which is not visible, but continuing its functions of maintaining the femininity. So that is why the Artava Dhatu is always there in the body of the female as an Ashtama Dhatu, irrespective to the onset of the menstruation or Rajo Pravritti. So here in this slide, you could able to see one more reference which also reflects the physiological changes of the genital circulation. I'm saying clearly genital circulations which promote all the changes in the endometrium or Garbhavartma. It is not translation, it is a classical word Garbhavartma, or you can say Garbhadhara Kala, because as long as you accept the Shukradhara Kala, when we go to a Kala Shariram, when you accept Shukra Dhara Kala, you are supposed to accept the Artava Dhara Kala in female. The same Artava Dhara Kala can also said as Garbha Dhara Kala during pregnancy. So therefore, for all these changes, the Mula Artava Dhatu is essential. We also come across a particular reference and by question, what happens to Artava Dhatu during pregnancy? And there the answer was the so-called Artava Dhatu, which is not visible during pregnancy, is reflected or function in the growth and development of the fetus as well as the breast development as well as lactation. That was the answer to that one. So therefore, now we never expect either the Upadhatu or the Malina Artavam for the growth and development of the fetus, nor the breast development or the lactation. So therefore, there must be a specific dhatu in female body, so which is always there from the very second of inception till her death. So thus it maintains the total femininity, and particular to the word fertility, of course, it is only possible during the age of Rutumati. So the fertile window for total age, and
specifically the fertile window of individual months, because this fertile window is specifically used for duration of ovulation or period of ovulation. So here reference Sukshmakesha Pratikasha Bija Rakta Vahasira Garbhashayam Purayante Masat Bijaya Jayate. Say here, all these changes are taking place. One is to generate the bija. So here Chaturthi Vibhakti is there, Bijaya. So this is a circulation in the form of Bija Rakta Vahasira. So whatever blood coming into the genital organs, it is definitely rich in the gonadal steroids. So or else we can say the gonadal steroids coming into the circulation of generative organs sensitizes its related cells in the endometrium or Garbhadhara Kala to take place all the changes. If it is a Garbhashayam, there will be changes in the Garbhadhara Kala, either so as to shed off at the end of month or to build up the decidua if an opportunity takes place to have a conception. So these are all spearheaded by this Bija Rakta Vaha Sira. So the vasculature in the endometrium. And similar changes also takes place in the Bijashaya also. So that is why here the Bijaya Jayate reflects. So Bija definitely is lodged in the Bijashaya. Therefore, the similar circulation is also there in the Bijashaya, only to get changes in the so-called Bija for its development as well as its Prasava, Bija Prasava or Bijotsarga. So thus, this cross-reference, because here Chakrapani also mentioned another cross-reference of Vishwamitra. We do not know is Vishwamitra. We never get any books written by Vishwamitra, as per my knowledge. However, he may be the pioneer during the time of Chakrapani. So thus, the physiological changes taking place in the Garbhashaya as well as the Bijashaya are meant, one for decidual reaction or decidual changes if pregnancy takes place, if not, just for menstruation during the age of menstruating life. Whereas in the Bijashaya, it in the same phase of female age, it also generates the Bija. So this is the reference, thus carries significance. So the same things what I have explained given here in this slide, and to cut short the time, the female hormones in the form of gonadal steroids mingled with blood or rakta, thus having same characteristics of rakta lakshana martavam, like that, influence the uterus to menstruate and the ovary to ovulate. So this is the gist of what we explained just now. And this is also reflecting the circulation. In every month, the capillaries named Bijarakta Vahasira pulls the Bahi Pravartaniya Raktam into the Garbhashaya. This all happens only when there is Bijotsarga or ovulation. And similarly, Bijotsarga again influenced by the Dhatvartavam or gonadal steroids. So when Srotojusti, such as Sangha, takes place in these channels, either that Sangha could be a chemical path or a physical path. If it is a physical path, anatomical obstruction like
traumatic or cicatrization in the srotas, or the chemical channels, particularly in the Abhyantara or Adrushta. There could be a Sangha, so resulting into a PCOS like Anartavam. So based upon all such Aptavachana, so whatever Paryaya, synonyms said for Artava can be reflecting their words like Rakta, Sri Rakta, Purana Rakta, and Bija Rakta, Bija, and even the Upadhatu Artavam in the name of Yonisrava. Yonisrava doesn't mean here white discharges. All the secretions from the Graafian follicle to the Bartholin glands, in all the genetic parts, whatever secretion coming in the generative organs or genital tract can be considered as under Upadhatu. So this is the basic concept on which the clinical aspects depends. So as I told earlier, the word Artava is having different understanding in various contexts, but interlink each other for common objectives such as cohabitation, capacitation, transportation, amalgamation, implantation, food and nutrition, maturation, and even pasteurization also. So at an every juncture, there is the significance of Mula Artava Dhatu as we talk about all the gonadal steroids before pregnancy as well as after the pregnancy or during the pregnancy. So therefore, we can attribute all these to the general features of womanhood for both femininity, stritva or the gynecology, and fertility, matrutva or in the obstetrics. So in this you can say in matrutva or prasuti tantra, so artava dhatutvam can be applied for garbhakara bhavas, apara nirmana, garbha vriddhi, stana vriddhi, stanya srava, and its own dhatutva also. So all these contents we come across in the prasuti tantra. We use it to talk, we use it to learn, we use it to teach as per the person's profession. Similarly, in Stri Roga also, we talk about this three Shukra. We all know very well the testosterones are prerequisites for certain type of estrogens. We know very well. So not only that, Shukradhatu is essential not for the pregnancy woman, but for other functions such as Utsaha, Dhairya, Ullasa, and so on. So all such functions are carried by Shukra testosterones of female. So thus these three Shukra word also can be substantiated. And similarly, the Artava in Sri Roga, it is giving Yojita Linga or Vyanjana or female characteristics or secondary sex characteristics also. And similarly, during the pre-menstrual age, it is helping for the growth and development of the yoni and sthana nirmana, and not only after delivery but also during intrauterine life. And similarly, it is also explaining the different Artava Lakshanas, characteristics, and management during the Artava Srava, and in absence of Srava also the different characteristics are explained, or Anartava Lakshanas explained in the same Sri Rogank. So thus
the different aspects of the same Artava Dhatu and its Dhatutva are explained into different specialities of Prasuti Tantra as well as Stri Roga. So ultimately, this whole science can be assessed or explored in 3 dimensions. Artava Dhatu, all the 4 aspects of Artava Dhatu we can learn. Similarly, Artava Vaha Srotas, so all the Rakta or Rasavaha Srotasas, but distributed in the genital organs, can be understood under the word of Artava Vaha Srotas. But here again, another aspect of Artava Vaha Srotas, that is Sthula Artava Vaha Srotas or Bija Vahinis, that also should be enumerated here. And similarly, one more, Artava Dharakala. So we always talk about the Kshetra. So Artava Dhara Kala is lodged in the generative organs in general and the Garbhashaya in particular. So therefore, these 3 are essential parts to substantiate the Dhatutva, particularly not as Upadhatu, but Mula Dhatu for the whole science of both Prasuti as well as the Stri Roga Vijnan. So these are all statements truly speaking. So if the time permits, I will state here or I may conclude here. Madam? Hello? हाँ जी मैडम, हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी। If the time permits to continue? हाँ जी सर, हम स्पीकर के ऊपर ही कि जितना आप ज्ञान दे, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं सर लेने के लिए। कोई ऐसे टाइम की बॉन्डेज नहीं है सर। Okay, आप हाँ जी, विषय को जैसे भी है ना डिस्क्रिप्शन में रखना चाहे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। So सारे अब तक जो चला वो तो ठीक ही चल रहे ना? नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। I am not getting bored. जी, नहीं, You are not getting bored, पक्का? नहीं, कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। चैट बॉक्स में बहुत अच्छे कमेंट है सर। जी सर। Okay, then I am instead of explaining, I am going on the what I have explained. I am stating here without any interruptions. I will go straight. जी सर। Here I am talking about the Mula Artava Dhatu, also calling it as Pradhana Artava Dhatu because it is controlling other forms of the same Artava Dhatu. So Pradhana Artava Dhatu as an Ashtama Dhatu is synthesized at the end in the chain events of Dhatu Parinama or as a Saptama Dhatu directly from Majja Dhatu along with the synthesis of Shukra Dhatu. So I have given already the Aptavachanas. So I need not reiterate here. The second point under the same Mula Dhatu is the Pradhana Artava Dhatu, similar to Shukra, is distributed all over the body of a woman via innumerable Sukshma Artava Srotas. They could be intercellular, vascular, and even chemical paths, and in turn exhibit various feminine characteristics during different epochs of a woman's life. Usually, Gauri, Rohini, Kanya, Rajaswala, Taruni, say what not, Yuva, etc., etc. So, the so-called Pradhan Artava Dhatu, which is distributed in the female body from the very second of inception, intrauterine life, even after birth, during various epochs of female life, it is showing its role not because of this Upadhatu or Malina Artavam, but because of this Mula Dhatu, which is always there from inception to death.
Till the time it is visible in the form of Rajasrava or Drishtartava, it is understood to be Adrishtartava, being hidden inside the body of a female. It is as similar as color, fragrance, and appearance of a flower in its budding stage. That's why the woman of Rajasvala is also called as Pushpavati, and Adrushartava as Antapushpa and Drishtartava as Bahishpushpa. And this is the gist of this Mula Artava Dhatu. When I coming to the Malina or Purana Artava Dhatu, Malinartava is the replica. Replica means Gauna or Upalakshana or mirror image like. Or Karya. So Karyat Karna Anmanam we know. So Karnam here is, as I told, the Mula Artava Dhatu. Karyam here is the Malinartava Pravritti. So therefore, Malinartava is the replica of Pradhana Artava Dhatu, since it reaches at its peak level to exhibit its existence outside. Therefore, major evaluation goes on Malinartava itself. So during our initial studies, that is undergraduate studies, we always read, and we only read the different characteristics of Malinartava, but saying as Shuddhartava. So the second point here is the Malinartava, contrary to its name, when holds normal features called as Shuddhartava or normal menses, similar to any other Mala Dhatu. So as I was saying. So by this it is understood that all the remained forms of Artava, when in situ or normalcy, are also deemed to be normal, and their abnormal forms are called Dushtartava or Vyapanartava. So you see, though it is a Malinartava, we are also calling it as Shuddhartava when its characteristics are normal. We know different Masa, Nispicha, Dahartar, Gunjafala, Savarnancha, etc., etc. I need not reiterate here. We by hearted in the undergraduation. So I hope all are with that characteristics. So then it is called as Avyapanna. But when the characteristics are changed, we are calling it as Dushtartava. I am not saying Drishtartava, but Dushtartava or Vyapannartava or Artava Sampanna, you can say. We come across during the Garbhotpatti, Sampat Lakshana of all the Garbha Sambhava Samakri. So Malinartava is the collection of Rasarakta Dhatu that shed out from Artava Vaha Dhamani. So we know Artava Srota Moolas are Artava Vaha Dhamani. Hence I put here. So Rasarakta Dhatu that shed out from Artava Vaha Dhamani or Bija Rakta Vahasira, or simply uterine vessels of Garbhavartma or Garbhadhara Kala. Here it means endometrium, Garbhavartma or Garbhadhara Kala. So analog, Garbhadhara Kala here is analogous to Artavadhara Kala, analogous to Shukradhara Kala, because no Artavadhara Kala is mentioned. But we consider always Artava analogous to Shukra. Hence I coined the name Garbhadhara Kala. So and at the end of each month, which process is again spearheaded exclusively by the Moolartava Dhatu as told earlier. So as the name implies, Malinartava, also known as Puranartava, is a biological end product of the functionary unit of the Pradhana Artava Dhatu. So thus this Puranartava or Malinartava is having two phases. The Puranartava Sanchita Avastha during Anrutu Kala. So after the ovulation, so usually the Sanchaya Avastha takes place. Gate Purane Rajasi Navecha Apasthite, like that the stanza goes. So therefore during Anrutu Kala or Rutu Vyatita Kala, so usually there will be a
sanchayam, and during prasrava avastha, rajasrava avastha, so rajokala or rajosrava kala. So thus we can observe. So there is a anrutu kala for sanchayam of the Rutu Rakta, and during Rutu Kala, the Raja Sravam. So thus the Puranartha Dhatutvam is a secretory phase in Garbhadara Kala of uterus and usually shed off at its end when no pregnancy takes place. So the Sanchayavastha Puranartha usually covers the secretory phase, and the last 5 days which are required to shed off will be end of the Anrutukala or the end of the secretory phase, what we call usually premenstrual phase. And here, once we have talked about Puranartava, naturally the opposite word alert us, Navinartava. And also we get Aptopachana, Gate Purane Rajasi Navecha Avastite. So which is reflecting the Garbhadana Kala. So for every Garbhadana requires the Bijotpatti. So thus it is also reflecting. So hence this Navana Artava can be said as Bijartava or Bijartava Dhatu. So Navinartava or Bijartava is secreted into the dental tract soon after the cessation of Puranartava, when from the woman is called after Rutumati or Rutusnata. So we know all, we by-hearted Rutumati Lakshanas also, the clinical features of ovulation. So today we may be having the ultrasonogram, but when there was no ultrasonogram, the clinician used to observe, or the patient is said to observe the clinical features of Rutumati. So which is reflecting the changes in the Bijashaya or Bijotsarga. So hence those all features are called after word Rutumati, because many of the features are related to mind, and therefore that may be the reason it is called as Rutumati. So the psychological changes we greatly observe during this phase. That may be the reason why the word Rutumati is used. And Navinartha takes part in the process of fertilization during the Garbhadana Rutukala. And the woman with this timing is called Rutumati, as just said above. So Navinartava helps in transformation of Garbhashaya Samsthana. The word Samsthana we used to observe in the Aptavachana. Yada rohitamachesya mukham bhavati rupata tat samsthanam tadrupam. We have got there the beautiful anatomy of the uterine cavity. That is why I have used this word here, because the cavity word is very important for us, because uterine cavity is reflecting the endometrium. Where there is uterine cavity poor, the endometrium also very poor. That is why I have given samsthana, because samsthana is having a functional ability also. Therefore, Navinatha helps in transformation of Garbhashaya Samsthana into Garbhashaya. So, when we read about Shankanabhya Krutir Yoni Travartas, Tritiyavarta, we there apply the Garbhashaya. Tasyas Tritiyetyavarte Garbhashaya Vidurpuduhu. So that is why here the Garbhashaya Samsthana of non-pregnant or not preparing for pregnancy is transformed only because of the Navina Artava, or the changes takes place during the ovulation, or the gonadal steroids secreted in
during the process of ovulation also bring changes in the Garbhashaya Samsthana, or turning the Garbhashaya Samsthana into a true Garbhashaya, or it's a embedding. The word itself is bed, embedding or implantation. So thus the Garbhashaya definitely equivalent word for this embedding or implantation. So thus the Garbhashaya is a phase for a great proliferation as well as decidual changes. And also Garbhashaya thus attains hostility to retain the Yugma Bija after the cohabitation. We know very well there is a formation of Yugma in during the process of Maithuna. So therefore, thereafter the fertilized ovum, also called as Yugma Bija, and so it is taking place after the cohabitation. So therefore, the changes that takes place in the Garbhashaya are headed by the Naveen Artavam to form the Garbhashaya. And simultaneously, Rasarakta Dhatu supplied to Bijashaya develops the Nishikta Bija in them, and there the Bija Prasava or Bijotsarga ovulation takes place to reach the Garbhashaya during the Garbhadana or the Rutukala. So, Rututu Nishiktasya Bijasya, the Aptavachana here applies. It also imparts in the formation of Garbhadharini or Apara after attaining pregnancy. So what happened to that Artava which was existing prior to the pregnancy? So during the pregnancy, you see, it is helping for the formation of the Garbhadharini. So the deficiency of gonadal steroids at this phase definitely resulting into a blighted ovum, or we can say simply the early pregnancy failure or early pregnancy loss. So that may be because of lacuna in the changes of Garbhashaya or lacuna in the changes of Garbhadharini or the placental formation, or whatever chorionic changes said as a primary part of the formation of placenta. All those you can conclude here. So thus Navinatava prepares Garbhashaya, Bijotpatti, Garbhastapana, and even Garbhavruddhi. So thus the synthesis of Bijatava in the Bijashaya is again controlled by the Mula Artava Dhatu and further supported by its Upadhatu Artava for sustenance of conception in case of successful pregnancy. I was saying it is helping for transportation, amalgamation, implantation, and so on. So everywhere there are certain specific fluids which are coming out of the local circulation, which is said as the Bijartava. So the absence of Bijotsarga from Bijashaya is called Abhijata due to Sroto Vidha. This Sroto Vidha either caused by exogenous factors or Agantuka Nidana, or decreased support from any or all the endogenous factors like Dosha, Dhatu, Mala, and Agni. So therefore, here it is a context of Srota Dushti, and under the Srota Dushti we have Atisrava, Astrava, and Vimarga Gamana, and this Srota Sangha. So these are all ways there. So there could be a Dhatu Dushti, Dhatu Dushti in the sense Artava Dhatu Dushti, which may results absence of bija, and sometimes say usually in such condition there may be menstruation but no ovulation, what we call anovulatory cycles. So sometimes there could be
Bijatva but no menstruation also. So there, so amenstrual ovulation. So many a times this context is reflecting this Srotovidya, either the physical one or anatomical one. So in the anatomical type of Srotovidya, usually the Agantuka Nidana plays the role. This Agantuka Nidana could be either Krimijanyam or Shastradi Janyam. So under this definitely sometimes Nidanardhakaratvam also. So all the endometrial factors, say maybe fibroids or what you call cicatrizations or scar tissue formations, or like Asherman syndrome, or even cysts, polyps, all these comes under. So they can be said even in Ayurveda as Arbudha, Grandhi, Arshas, like that. So all these makes physical hindrance or Sroto Vidha. So anatomical Sroto Vidya, that is why I'm saying. So whereas physical functional loss, either maybe because of the Agni bringing changes in the Dhatu Parinama not to produce the proper or Shuddha Mooladhatvartavam. And here one important point I would like to recollect and remember and notify is that Majja plays major role, but we have no Majjadhara Kala, whereas we have Medodhara Kala. And Majja itself is a complex of Medodhatu. And its predetermined dhatu is asti. Majja includes osteophytes and lipoids also. So thus the ancient Ayurvedic theory is equally true what said in today's modern science. So therefore we need not always go for the Ayurvedic modern physiology. You can switch over to your Ayurvedic physiology and particularly pay more attention on the Dhatu Parinama. So we all know very well in the beginning we used it these PCODs and other things as endocrinal. Now we are also saying it is a metabolic, and today above that we are saying it is a lifestyle disorder. It's true, this lifestyle disorder shows more impact on Medodhatu. So Medodhatu, what happens? The fat metabolism is changed. The Uttara Dhatu, Madhya Dhatu also will change because the Medodhara Kala is there in the Asti in the form of the Madhya. So therefore here, instead of saying the Madhya, what type Madhya, you are also having the Sarakta Madhya. The Medas, here is Sarakta Madhya. So therefore, again Rakta Dhatu also included here. So thus, the Rakta, and it also include the Mamsa, because Meda Dhatu comes from Mamsa. So thus Rasta, Mamsa, Meda and Majja. So Majjadata includes the Rakta, Mamsa and Meda. If you go through the analysis of bone marrow, definitely you see only these three types of cells. So therefore, the metabolism of Majja Dhatu, the Dhatu Parinama of Majja Dhatu is very, very essential to produce the effective, the Mula Artava Dhatu. And today we are studying in the modern hormone therapies only these theories, but in the modern language or English language. So why don't we switch over to our Dhatu Parinama, the Majja Dhatu Parinama and Majja Dhatu Sara Lakshanas, wherein you can find out the deficiency of this Artava Dhatu. So therefore, I request all my dear faculty to look at the Majja Dhatu Sara Lakshanas
in whom there is deficiency of female hormones. Either it may be FSH at higher level, or maybe estrogen progesterone at low level, and even the AMH, anti-Mullerian hormone also. And not only that, you can also think of the accessory hormone, that is thyroid. So you all know very well the fat metabolism is highly linked with the thyroid hormone also. So thus I request all the learners or pioneers, even I dare to include the pioneers at this juncture. The pioneers, or otherwise the faculty, are requested to look into this type of dhatu parinama of Ayurveda and make a yardsticks or parameters on the basis of both Medo Dhatu as well as the Majja Dhatu. And not only that, you can include the Rakta and Mamsa also. Because when we talk about the Medo Dhatu, it's opposite Lakshana. Karsha also come across. And we used to observe this PCOD type of cases or anovulatory cycles or Sroto Sangha in both Karsha as well as Staulya. So in Karsha it could be because of the vitiated Vayu, and in Staulya it could be Kapha Sangha or Medo Dhatu Sangha. So that we have to differentiate. The outcome could be the same of anapatyata or abhijata, but the line of treatment will change. So that may be the reason why all the drugs we use in infertility never act equally. So therefore, I once again reiterate to go through the Ayurvedic metabolism or Dhatu Parinama at all levels, A to D. So Rasa level to Artava levels, all the not 7 levels but 8 levels, because I am here trying to substantiate the 8th Dhatutvam for our beloved Artava Dhatu. So thus when no pregnancy takes place, the Navanatva turns slowly into Puranatva during Anruta Kala, that is Ritu Vyatita Kala, only to expel out at the end of the month as the Rutusrava. So thus Navinartva Dhatutva is a proliferative phase of Garbhadhara Kala and aids in its receptivity for Yugma Bija. So it is, so any secretory phase is supposed to be primed with this proliferative phase, what we always read. So the estrogenic phase prior to progesteronic phase is very, very essential. So this comment reflects the such a type of a modern statement. And ultimately, I need not reiterate again the Murtitvam of Upadhetu. So it is reflected everywhere from the ovulation in the form of lichar folliculi till the amniotic fluid at the time of parturition. So at every levels of genital tract, it is supporting the process of rebirth or the process of pregnancy as well as the labor. So thus my contention for Upadhatu is all these secretions supporting the pregnancy, and not only the pregnancy, it is maintaining the femininity locally in the genital tract. Say, for example, femininity, why I'm saying here is a woman suffering from frigidity. So definitely we suspect the lacuna of the secretions in the genital tract. So it is of local action. So frigidity could be a
systemic one, it could be a psychological one, but that psychological frigidity may be developing from the local dryness of the genital tract, and the dryness, once the woman faced a dyspareunia, later she may suffer from fear complex, that fear complex leading to central prana, vyana and apana, or overall vata vitiation, thus altering the mental attitude of the woman. You know very well what is that indriyana manonado manonadostu marutah. So definitely the cerebral cortex here plays the role in case of frigidity in women. So here, so what I said here is here. I'm going forward, please. So ultimately, these secretions. So ultimately, all these secretions at various levels of genital tract is, of course, again influenced by the synthesis of Mula Artava Dhatu, so which is synthesized in the regular Dhatu Parinama. So here, to substantiate the Dhatu Parinama, we come across the different kalas in the name of Rakta, Mamsa, Meda, Shukra, Purusha, Pitta and Shleshmadhara Kala. So in these Ashtavida Kala Shariram, we carry importance to Rakta, Mamsa, Meda and Shukra. And this, as I told just earlier, Shukradhara Kala analogous to Artavadhara, hence called as Artavadhara Kala. And Artavadhara Kala in the Garbhasha also can be said as Garbhadhara Kala, particularly during the preparation of the pregnancy or during the pregnancy. So out of seventh Kala called as Shukradhara, which is pervading all over the body of any living being. So here the Shukradhara Kala is not limiting only to the Shukra Bijashaya or Mushka or the Artava Bijashaya. So it is said as, its Kshetram is said as all over the body. Hence the Shukradhara Kala also said to be distributed all over the body. So, so we know this is reflecting during the course of cohabitation, wherein each and every part of the body takes part in the act of sex. So that particular understanding will definitely reflect the theory of Shukradhara Kala distributing all over the body. So it is pervading all over the body of any living being, similar to ghee in the milk and sugar in the sugar cane. So the upamiti given in our classics. So Artava's eighth dhatu in woman is produced either from predecessor, that is seventh Shukra dhatu, or directly from the sixth Majja dhatu. So I was telling the dhatu parnama earlier. So Shukra dhatu is covered with Shukra dhara kala. So also Artava Dhatu by Artava Dhara Kala. So not locally in the genital tract, but also all over the body. So this principle we can understand by recollecting the knowledge on aromatization. So aromatization, there are aromatization of the testosterones into estrogens, we know very well. So the centers for this aromatization is not limiting only to the gonads, no, not limiting only to the this ovaries. So it is extending even onto the brain tissue also, even the fat tissue all over the body also. So thus, this our Ayurvedic theory is also reflecting this. Shukradhatu or Arthodhatu is spread all over the body in the words of
aromatization and its receptor cells. So therefore, the receptor theory of aromatization, so definitely stands good for this Shukradhara Kala of all over the body. So Bijashayatu contains Artava Kala, analogous to Shukradhara Kala or germinal epithelium in male for the production of Avyapanna Bija Artava, that is quality egg as well as female hormones. It is expected to be delivered during Garbhadana Kala, that is Navina Rajo Kala, that is fertile window, the day 8 to 16 in a month, as said in Charakas Jati Sutriya, principles of childbirth, that is Garbhavakranti, and as well as Jati Sutriyam also. So Majjadhatu never have any such coverings because there is no Majjadhara Kala, as I was saying. Nevertheless, Majjadhatu is not other than Medodhatu, which lodges in the tubular structures of Asthidhatu. So therefore, the Majjadhatu is obviously covered with the third Medodhara Kala. The Meda or fat is located in the Udara of all the living beings and also lodged inside both Anu and Sthulasthi, that is small and large bones. So we used to have this reference in our classics only. So the moolas for Medavahasrotas is Anvasti as well as the Sthulasthi. The Medadhatu lodged in Sthulasthi is especially termed as Majjadhatu, that is white bone marrow. The Medodhatu that lie in all other flat and small flat spinal bones is termed only as Sarakta Medas or bloody fat or red bone marrow. The untainted essence of Mamsa Dhatu, that is muscle tissue, is called as Vasa, which is again a type of Meda Dhatu. Therefore, whenever you are enumerating Mamsa Dhatu, it is equally also carrying the other form of Meda Dhatu named Vasa. So by function, all the fatty layers in the abdomen, so that is Vapa Vahanam, should be considered as Medodhara Kala. So by the above information, it is understood that almost every part of above said Dhatu Parinama is linked with the Medo Dhatu. It is not untrue if mentioned that both Rakta and Mamsa Dhatu are also having close relation with the Medo Dhatu. This is understood in the words of Sarakta Medas, hemopoietic bone marrow or red bone marrow in bones and Vasa in Mamsa Dhatu. So that is about the Dhatu Parinama and the role of Artava Dharakala and Artava Dhatu. And the last 2-3 pages only, 2-3 slides only. So it will be incomplete if unless I mention the Artava Srotas also, because there are so many controversies in enumeration of the Artava Srotas also. That is why I would like to present here also. Whenever we say Dhatu, relatively we also mention the Dhatu Vahasrotas. To bring basic understanding of this also, I am presenting the Srotas here. So bear with me somewhat to 5 to 10 minutes more, please. The human body outlets, as in ancient treatises, are familiar in the name of Bahirmika Srotas or Navarandra, the 9 biological body openings, namely, say Karnatu, Nasatu, Akshitu, Mukhavan, Shefar, Mutrapatavan, Payu or Gudavan, and Upastha, Bhagar, Apatya, Padavan. Say Apatyapada along with the pair of Sthana Chidra are additional 3 Sthula Srotas in female which are opening on the skin. So thus there are 12 biological openings in a woman. Women never have Sthula Shukra Vahasrotas or Shefa to eliminate Stri Shukra Dhatu, but will have only Sukshma Shukra Vahasrotas
because Sri Shukra is also there, no? That spread all over the body to maintain their bala, dairya, utsaha, etc. as explained earlier in the context of Artava Dhatu. Here, Stula Bahirmukha Rajovaha Srotas or Upastha in female are analogous to Stula Bahirmukha Shukravaha Srotas or Shefa in male. So factually, unlike other visceral organs, the Garbhashaya or genital tract, here Garbhashaya doesn't mean only the uterus, it reflects also the genital tract, is a part of Travarta Yoni, and also it has got Trimukha Nadi. So because it is having Tisra Garbhadvaras with 3 openings, 2 above Artava Vaha Praveshinyaha and 1 lower Shukra Praveshinyaha. Thus 3 openings in the uterus. Here Yoni Garbhashaya with Upastha is called Stula Bahirmukha Artava Srotas or Rajovaha Srotas, as it visibly menstruates every month periodically. One part of embryonic body called common ductal organ of Mullerian. So there is only one Rajovaha Srotas during embryonic life or Kudika Garbha. Later Mahadev Garbha, and differentiates into the Garbhashaya and Artava Srotas on its top, and a neck-like part at the bottom to connect with the tube-like structure of Apachyapada. This I am trying to elaborate the embryological aspect, how the Artava Srotas is established. And ultimately Apachyapada again opens onto a skin part called Upastha, as the name implies. The opening in the cervix of uterus is called Garbhachidra or Garbhadvara, as said in Aptopavachana. It is not translatory words. And the pair of Artava Srotas from the corners of the top of Garbhashaya is intended to serve the purpose of transporting the Sri Bija, which is released during Garbhadana Kala from the Bijashaya. So that is why I have tried to mention the Srotas and the anatomy of the even Garbhashaya, to not only to reflect the Travarta Yoni or Garbhashaya, but also reflect the Artava Srotases and its Chidras. So the upper 2 openings are meant for Bija Vahinis, because Bijashaya is separate, it releases Bija, so it is supposed to come into the Bija Vahini, so that is Bijartava Vahini. So definitely there must be a Stula Artava Srota. That is my intention to mention this aspect. So we know the word Antafala. So here the Antafala used as singular word. Antafala, when it is used singular Antafala, so it reflects the Garbhashaya. But Antafalau Dvivachanam, it reflects the Bijashaya, the pair of Bijashaya. That is also very important during the commentaries. So thus the Bijashaya 2 organs also come under Sthula Artavaha Srotas as enumerated in Susruta Samyutta. So this is the anatomy to explain the Artavaha Srotases, because Artava Srotas is simultaneously called as Bija Vahinis, because there is a link in between Bijashaya and Garbhashaya. So that is played role by this Artavahe Dve. So we are calling Artavahe Dve. So there is nothing else other than these 2. So that is why I am saying Artavaha Srotas are also called as Bija Vahini. They are oviducts, Bija Vahini oviducts. So otherwise known as fallopian tubes, accounted under Ashtamarma. So during the Vidha, Ashtamarma which are not to be axed or Abhighata. So under those we come across this Bija Vahini also. So thus this what you call Srota Vidya physically give this Ashtamarma reference gives a good source. And any sort of doshaja or agantuja, Srota Vidya in these Srota shall lead to any
one or all the ailments such as Artava Nasha, Maithuna Sahishnuta, and even the Vandyatva. So we can also mention here with the word Artavanasha, not only the exo Artava or Bahipushpa, but also the Abhijata also. Because Bijotsarga also a type of Artava Pravritti. So Bija Artava Pravritti. So it also may face the uh, Sroto Sangha. So that is why, along with Artavanasha, Maithanasahishnuta, Vandyatva, Maithanasahishnuta, dyspareunia also include the frigidity tendency of the female. So thus, so many dimensions with the Sroto Sangha, biologically or physically. The single Stula Bahirmukha Artava Srotas, a bottom of Garbhashya, also known as Rajova Srotas or Raktapada, eliminates the Purana Artava that is accumulated in the Garbhashya over a period of 1 month or so. The same Stula Rajova Srotas again temporarily transforms into cylindrical passage and may be called as Garbha Vahasrotas, that is birth canal, or Prasava Marga, parchment canal, as it is facilitating the Garbha Nishkramana when the pregnancy reaches its term or even during the termination also. So at the end it is to state that Raktadhara Kala, Mamsadhara Kala, Medodhara Kala, Shukradhara Kala, Artavadhara Kala, and all their related Dhatu and Dhatuvaha Srotases are having mutual relations in maintaining their functions and influence the woman's body as a whole to maintain the womanhood. Nevertheless, the presence of Shukra and Artava Dhatu in proper quality and quantity produces exhilaration and sexual urge, and the response is seen enveloping the whole body when one is oriented to have an intercourse or performing sex. The whole body of a woman is proved to be a abode of both Artava Dhara and Shukradhara Kala and their related Dhatu and Bija. So therefore, I hereby conclude that Artavadhatu, by having its own qualitative and quantitative murtitvam, because dhatu itself is for dharanam as well as murtitvam also. We cannot imagine any dhatu. So we have mentioned 4 dimensions. So far we are not explaining what exactly the upadhatu. Here I tried at my level best with my knowledge available with the help of our Aptavachana. I have tried to prove the murtitvam of upadhatu, and also the initial one, the important one, the premier one, I can say, the Mula Artava Dhatu. Also, so far, no one has tried to establish its Murtitvam. I feel I tried with my little knowledge. I have established the Murtitvam of this Mula Artava Dhatu or the Ashtama Artava Dhatu. So also manifests various clinical implications where every PTR specialist has to focus the torchlight of their wisdom instead of simply and blindly following the one and only hormonal replacement therapy available in current day of modern gynacs. So as I told earlier also, you apply, until unless you understand the hormonal the dhatu management, so you cannot understand even the its replacement in the form of ahara, in the form of aushadha, and even in the form of vihara also. We need not think that the dhatu parinama is only based on our food. No, the Dhatu Parinama definitely and at lot influenced by our living style also, that is Vihara.
So vihara definitely including the achara, sadachara. So that is why our people say the sadvrutta or the achara rasayana. So definitely thus vihara also plays a role in harmony of the hormones, particularly the woman, because she is now a economical instrument both in the home and in the office also. So therefore there is every possibility for psychological disturbances, so also hormonal disturbances. Indriyanam manonado manonadastu martava evasse. So therefore, until unless these are harmonized, she always suffer from the Artava Vyapat. And we know Artava Vyapat may lead to the Yoni Vyapat equally. So the Yoni Vyapat, of course, however, violates the Dhatu also, or it need not be, respond to the Artava Dhatu, or it never have proper receptors to get reflection from the female hormones when there is a yoni vyapat. But when there is artava vyapat, it may reflect or it may result the yoni vyapat. This is pakka. So therefore here I conclude with a great thanks to the organizers of Vishwa Ayurveda Parisad, among whom I am also a member here at Telangana, and I hope what I have tried to establish will definitely useful not only the learning people but also a amateur. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. It is our pleasure to hear you. Very good presentation, excellent explanation. तो हम सबको आपने अपने इस ज्ञान से अभिभूत किया, इसीलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद आपका किया जाए डॉक्टर साहब, इतना धन्यवाद बहुत ही कम है। आपका इस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बोलना जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो मैं विषय के विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर हेतल मैडम जी को निवेदन करूंगा कि इस सब्जेक्ट पर थोड़ी सी आप अपने विचार भी प्रस्तुत कीजिए। ओवर टू हेतल मैडम। सही कह रहे हो डॉक्टर हार्दिक, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब। पूरा चैटिंग बॉक्स उसी से भरा हुआ है और बहुत सारे विद्वानों ने आपकी इस विषय की प्रेजेंटेशन को, उनकी डीप नॉलेज को बहुत ज्यादा अच्छी तरह सराहा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको सुना था तो मुझे लगा कि सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो तुरंत ही हमें बहुत अच्छा ज्ञान की गंगा में वो सरोवर कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। आपने स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र दोनों विषयों को साथ लेके बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, साथ में थ्योरी एस्पेक्ट, साथ में आधुनिक विज्ञान को साथ में लेते हुए, और मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अभी सुन रहे हैं वो सारे इस बात से अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, अपना दृष्टिकोण में सुधार करेंगे और अपने प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता को, वैधता को, और उसमें हमेशा जो एक नित्यत्वात वाली जो एक क्वालिटी है उसको आप महसूस करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन भी करना चाहती हूँ कि जैसे ये सारे लेक्चर 242 से लेके 15 मई से लेके 15 मई 2020 से लेके यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर उपलब्ध है। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा समय नहीं रहा, जर्नी में थे, तो आप सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह से फिर से भी सुन सकते हैं। और अभी सर के लेक्चर्स के लिए भी इसी तरीके से कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि भी ये फिर से भी सुनना चाहेंगे। इतना ज्यादा था कि हम 2-3 बार सुनेंगे उसको। बहुत बार स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं और टीचर्स भी यही कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने ज्ञान से हमें सभी को बहुत ज्यादा लाभान्वित किया।
और हम डेफिनेटली आयुर्वेद को इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और हमें बहुत ज्यादा जो एक समाज से प्रतिसाद मिलना चाहिए जिस तरीके से, उसको मिलने में ऐसे लेक्चर्स बहुत ज्यादा हमें मददगार होंगे। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत मीन्स धन्यवाद शब्द जैसे डॉक्टर हार्दिक ने कहा कि कम है, तो ये सच में लग रहा है कि नहीं, आज ज्ञान का जो एक स्वरूप हमने देखा है वो बहुत ही अमूल्य और अतुलनीय है। हम उसका एक धन्यवाद शब्द से वो पूरा नहीं हो सकता सर। और सभी स्टूडेंट से भी निवेदन है कि आप इसी तरीके से आयुर्वेद को समझने के लिए, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे और व्यक्तिगत रूप से आगे आएंगे कि हम आयुर्वेद को इसमें आगे बढ़ा सके। आज के व्याख्यान के लिए मिस सर पहली बार हुआ है कि उसमें क्वेश्चन नहीं आए, वरना लगभग 2-3 क्वेश्चन आते ही है चैट बॉक्स में। सभी प्रतिभागियों को पता है कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि आपने इतना अच्छा डिटेल में समझाया है, तो सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो और दूसरा कि मैं सभी को बताना भी चाहूंगी कि जैसे सभी प्रतिभागियों में से कोई ना कोई हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट भी बताता है कि आप इस विषय पर अपना लेक्चर करवाइए। तो अभी एक प्रतिभागी डॉक्टर नीतू है, उन्होंने कहा था कि यूट्राइन प्रोलैप्स एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो सिस्टोसिल रेक्टोसिल, और उसके ऊपर मैंने सर से आज सुबह ही निवेदन किया कि सर आप उस विषय में भी हमें अवगत कराइए, और सर ने तुरंत ही उसके लिए हाँ कह दी। तो सर आपका अग्रिम हार्दिक धन्यवाद कि आपने तुरंत ही इस तरीके से हाँ बोली, कंसेंट दे दी। और इस लेक्चर्स के लिए भी मैंने सर आपको निवेदन किया तो आपकी तुरंत ही सहमति थी। तो सर विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हम आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी प्रतिभागियों में से जो स्टूडेंट्स है उनको भी कहना चाहती हूँ कि आपके पास कुछ भी ऐसा हो कि हाँ इस पर सुनना है और इसी टीचर से सुनना है, तो हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हम स्टूडेंट्स में जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहते हैं, और जिज्ञासा है तो उसकी शांत कैसे करना, उसके लिए ज्ञान की किस तरीके से हम ले, उसको भी हम करेंगे। तो आप बताइएगा, हम सजेशन के अनुसार उस पर्टिकुलर टीचर से भी निवेदन करके उनको अपने व्याख्यान में आमंत्रित करेंगे और हम इस ज्ञान का सभी लोग लाभ उठाएंगे और हम अपने आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ भी है तो आप हमें बता सकते हैं, मेरे ग्रुप में भी डाल सकते हैं, पर्सनल मैसेज में भी डाल सकते हैं। तो आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज के हमारे व्याख्यान के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीक्षा खतुरिया और डॉक्टर भार्गव जी, अश्विनी जी भार्गव, दोनों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप दोनों ने समय निकाला, आप यहाँ आए और विश्व आयुर्वेद परिषद के उद्देश्य से सभी प्रतिभागियों को भी आपने अवगत करवाया। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और स्पेशल आज हमारे मुख्य वक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक उपस्थित रहे हुए सारे प्रतिभागियों को और पहले भी जो आए थे उन सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हम सभी यहाँ इस मंच पर आयुर्वेद को एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए इकट्ठे होते हैं और हम आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लोगों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे सके और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवा सके, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं। और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हमेशा एक बार ऐसा लगता है कि पूरा होकर ही रहेगा। आज के व्याख्यान के अंत में मैं डॉक्टर भारती सामोता को शांति मंत्र के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर भारती सामोता, हाँ जी, सभी एक साथ में शांति मंत्र बोलेंगे। भवन्तु सुखिनः